very good morning and Jain, my dear students. Today we are going to study about the calendar. In a calendar, what we find out? हम calendar में हमें क्या क्या मिलता है? We have months, we have weeks, we have days and the numbers. There are how many days in a month? We know this also, right? So everybody open the book and the page number I'm telling you. Yes, the page number is 140. You can see here there is a calendar, right? आपको यहाँ पे पूरा एक calendar दिख रहा होगा. So now you must have seen there are different kinds of calendar, right? There are different kinds of very beautiful, very colorful, और कुछ कैलेंडर ऐसे होते हैं जो एक ही पेज में पूरे मंथ्स दे देते हैं. कुछ अलग अलग मंथ में होते हैं विद द टॉपिक्स. एंड फ्रॉम द स्कूल ऑल्सो यू गेट कैलेंडर, रिमेंबर. सो ऑल दीज थिंग्स यू नो कि व्हाट इज कैलेंडर. कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? मंथ के नेम, डेज एंड द नंबर्स, डेट्स, राइट. सो इन चीज़ों के लिए हम कैलेंडर को स्टडी करते हैं. नाउ यू नो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर. देयर आर 12 months in a year. एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12, 12, राइट. नाउ हाउ मेनी वीक वी हैव, दैट वी डोंट नो. ठीक है, हमें वीक में कितने दिन होते हैं ये हमें जानना है, क्योंकि हर एक मंथ में वीक्स डिफरेंट होते हैं. किसी में 4 वीक्स तक मंथ होता है, किसी में 5 हो जाता है. तो इट डिपेंड्स, तो उससे मतलब नहीं है. एक वीक में कितने डेज होते हैं अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक वीक में कितने होते हैं? 7 days. You know what are they? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, right? So these are what? They are week. ठीक है, वीक में इतने डेज होते हैं. ये क्या है? डेज हैं, है ना. ना, एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7. और 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12. What are they? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. एंड ये जितने 12 मंथ्स हैं इनका नंबर है, एक ऑर्डर होता है. ऐसा नहीं होता कि जनवरी के बाद नवंबर आ जाए, राइट. दे आर इन प्रॉपर सीक्वेंस, दे आर इन प्रॉपर ऑर्डर. सो नाउ you know what are months we have discussed. You know what is week names, right? week में कितने days होते हैं? There are 7. So you have to write in your notebook month's name and days also. Okay, so let's start. So now this you have to note down in your notebook. You have to write heading months of the year, and then you have to write from January to December in one page, and in second page you have to write days of the week, that is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. This also in this next page. How to do in the notebook I'm telling you. You will write here months, heading रहेगी months. Here will be your date in the corner, and start writing like this: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And then if you don't have space you can write here 11 12 also. Here you will write like this: January, okay, February. You have to write, and if you want you can write number of days also, right? February. Now in January there are 31 days, okay. In February you have 28 or 29 days. It depends on the leap year. If there is a leap year then there will be 29 days, okay. So now let's do it. January, February, then we have March, April, May, June, July, August, September, October, and then November, December. Now first of all write down the
number of days in a month. All right. So now in March you have 31 days. In April you have 30 days. It goes on vice versa. एक में 31, एक में 30. Then May you have 31 days. Then June 30 days. July 31 days. Mention this also. In August 31 days. Now July and August both have 31 days. Okay, remember that. September 30 days. October 31 days. November we have 30 days. And December 31 days. You have to do like this. Clear? Mention it and do it in your notebook like this and learn the spelling and number of days. Now understand what is leap year. Leap year comes after every 4 year और उस दिन आपका 1 day बढ़ जाता है. As we all know that 1 year में 365 days होते हैं. एक साल में कितने days होते हैं? 365 days. But जब leap year होता है तो there is 366 days. So how to calculate leap year? We divide the year with 4. अगर वो exactly divisible है that means it's a leap year. Right? So this is the method for finding out the leap year. So you have to note down the month's name and days. Okay, you have to mention months and days in your notebook and you have to learn the spelling. All right, so मैंने अभी months बताया है and then I'm going to write the days also. Okay, for days also you will do like this only. The way you have done months, you will write here days in a week. एक week में days कितने होते हैं? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7. You will write like this: Sunday, Monday, Tuesday, then Wednesday, Thursday, Friday, then Saturday. So you have to learn the spelling. This you have to learn and month name also you have to learn. Alright. Now moving to the book exercise. Now you can see here there is a calendar which I have told you that is on the page number 140. Page number 140. Now you can see here everything is mentioned over here whatever I have taught you. 1 year has how many months? 12 months. And how many days? 365 days. Each month is divided into weeks. हर एक month में weeks होते हैं. एक week में कितने days होते हैं? Which we have studied right now 7. That are Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, like this. A month has 4 weeks and a few more days. 4 week हर month में होते हैं और कुछ उससे ज़्यादा दिन. Now what I was talking about, that leap year, you can see here a leap year has 366 days. February has 29 days in a leap year. Otherwise February is 4 weeks long. Okay, 2012 was a leap year. Now so after watching this calendar you can move to the questions. Now see on page 140 there is one question: write the names of the month which have 31 days. I have told you to नोट डाउन इन योर नोटबुक. आपके नोटबुक में मैंने कराया है वो डेज वाली चीज़ें. सो यहाँ पे भी हमें मेंशन करनी है. यू कैन सी द कैलेंडर एंड यू कैन राइट हियर. जनवरी हैज़ 31 डेज. मार्च कॉमा मे, you will write like this: May, comma July, comma August, comma October. Okay, let me write it clearly. It's not visible properly. Okay. Okay. Now it's better. And at last December. If there is no space, you can write over here also. उसके नीचे भी लिख सकते हैं. Now next question is write the names of the month which have 30 days. जिसमें 30 days होते हैं. Now write down. Start with April. April, June, September and November.
these month have 30 days and these have 31 days. You can learn this because it might come in your exam, right? How many days are there in the month of February in a leap year? जब leap year होता है तो कितने days होते हैं February में? That is 29. Okay, 29 days. नेक्स्ट, ऑन विच डेज विल द फॉलोइंग फेस्टिवल फॉल दिस ईयर? इस साल में ये सारे फेस्टिवल किस दिन, डेट और डे पड़े हैं? आई हैव ऑलरेडी फाइंड इट आउट एंड आई एम टेलिंग यू. पोंगल था 15th January and it was Wednesday. I am talking about year 2020. You can mention here year 2020 and this was Wednesday. You can note it down. Holi was on 9th March. That was on Monday. Eid we have celebrated on 31st July, okay, and it was Friday. Note it down. Baisakhi was on 13th April and it was on Monday. And Christmas, as we have 25th December, it is on Friday. You can see here, you can see this. You have to do it in your book. All right, now next what you have to do is move to the next question, that is your projects, right? See the project. You have one project also, you can see in your book, okay, that you have to do by your own. You have to do it. All right, and now move to the enrichment activity. After doing this, there is one project here. In that project you have to mention that next month, ठीक है, next month की आपको क्या बनाना है? कैलेंडर. All right, let me tell you everything. Now see, what is the project I'm explaining here. In that project what you have to do, you have to make a calendar of 1 month. ठीक है, next month का. अभी कौन सा मंथ चल रहा है? दिसंबर. सो यू हैव टू मेक जनवरी का बनाना है, दैट इज़ 2021. ठीक है, और जनवरी फ्राइडे को फर्स्ट होगा. ठीक है, सैटरडे विल बी 2. इस तरह से आपको एक प्रॉपर कैलेंडर बनाना है एंड देन यू हैव टू आंसर सम क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 7. टोटल कितने क्वेश्चन है? 7. उसके आंसर्स देने हैं. ठीक है, सो इफ़ यू डोंट नो तो यू कैन डिस्कस विथ मी लेटर ऑन, बट ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन. ओके, एंड आई विल बी सेंडिंग यू PDF, सो अगर कोई डाउट हो तो आप उसमें से देख सकते हो, बट ट्राई टू डू इट बाय योर ओन. ओके, so this was that. Now move to enrichment activity. Everybody move to enrichment activity and it is on page number, let me see the page number. It is on page number 174. Page number 174. Write down the page number, let me write it. 174. Okay, so now see here, page number 174. Question first बोल रहा है, टिक द करेक्ट ऑप्शन. योर विंटर वेकेशन लास्ट. विंटर वेकेशन कितने दिन का होता है? 10 hours, 10 days, 10 minutes, 10 days, right? क्वार्टर पास्ट 6. आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू क्वार्टर पास्ट एंड क्वार्टर 2 में क्या डिफरेंस है. तो क्वार्टर पास्ट मीन्स 15 minutes, right? इज द सेम एज 6:15, right? वन डे हैज़, एक दिन में 60 minutes होते हैं? नो. 24 hours होते हैं? येस. 7 weeks होते हैं? सो वन डे हैज़ 24 hours. वट एवर आंसर यू फील लाइक करेक्ट, यू हैव टू पुट अ टिक मार्क. इफ़ टुडे इज़ थर्सडे, अगर आज थर्सडे है, टुमारो विल बी, अगर आज थर्सडे है तो कल क्या होगा? फ्राइडे. पुट अ टिक मार्क. नेक्स्ट, डैश कम्स आफ्टर अगस्त. ओके, सो विच मंथ कम्स आफ्टर अगस्त? अगस्त के बाद क्या आता है? That is September, right? So do this question and now write the time. I have already given you so many questions about time, so this is your homework. This you have to do by your own. It is on page number 174. Do by your own. I am not going to help you out. Here you can write the question answers like this. Number में 6 or
6 o'clock. इट्स योर विश, किसी भी एक तरीके से आपको इसको आंसर्स लिखने हैं. ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन दी ब्लैंक्स. डैश इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. किसी भी ईयर का पहला मंथ कौन सा होता है? दैट इज जनवरी. यू हैव टू राइट हियर JANUARY, जनवरी. देयर आर डैश डेज इन अ ईयर. एक साल में कितने डेज होते हैं? दैट इज 365 days. And learn this also, okay? Learn it. The month of February in a non-leap year has dash days. अगर लीप ईयर होता है तो 29 डेज होते हैं. नॉन लीप ईयर है मतलब लीप ईयर नहीं है, सो कितने डेज होंगे? 28. क्लियर? यू हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग. 1 hour has how many minutes? 60 minutes. 1 hour has 60 minutes. Making tea takes about dash minute, hour और days. कितना टाइम लगेगा चाय बनाने में? मेकिंग टी, मिनट्स. ऑल राइट. नाउ आफ्टर दिस वी हैव completed this much. Our time chapter is completed. So now tomorrow is your test. Tomorrow is your test. Be prepared for test of lesson this time chapter. Which chapter? Time chapter test tomorrow. Okay, so be prepared. I can ask any question. Tell the time, show the time. Calendar से भी questions पूछ सकती हूँ. Anything I can ask. So practice more and more. Learn everything whatever I have said, and even I can give you the dictation also of month name or days. Okay, so learn whatever is required and practice. Okay, for the test. कौन से चैप्टर का टेस्ट है? टाइम. ओके, सो टुडे इज मंडे, सो ट्यूसडे इज योर टेस्ट. ओके, ट्यूसडे टाइम चैप्टर टेस्ट. एंड आफ्टर दिस ऑन वेडनेसडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम टेलिंग यू, वी विल बी डूइंग UT2 रिवीजन. ठीक है, हम लोग UT2 का रिवीजन करेंगे ऑफ ऑल द टॉपिक्स. जो भी हमारे टेस्ट में आने वाला है, वी विल बी डूइंग रिवीजन. ऑल राइट. So that's all. So that much is for today. So tomorrow is your time chapter test. Be prepared. Do enrichment activities also. And your course book को भी पढ़ना है, notebook को भी पढ़ना है, and you have to see the enrichment activity. And tomorrow will be your test. Maybe it will be from the Zoom app. So be prepared. I will be asking questions, and I can ask the spellings also of months and week. Okay, weekdays के स्पेलिंग भी पूछ सकती हूँ मैं. हर एक वीक में कितने डेज होते हैं, सारे इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनाऊंगी मैं. एंड हर एक मंथ में कितने कितने डेज होते हैं. एंड लाइक ईच मंथ के भी मंथ्स मैंने पूछा, लाइक अप्रैल में हाउ मेनी डेज आर देयर, आई कैन आस्क इन दिस वे ऑल्सो. So there are different kind of questions which I am thinking over it, and I will be asking you tomorrow. All right, and on Wednesday we will be going to do the whole revision of UT2. All right, and I will be giving you practice sheet on that day. Okay, so bye bye, take care, have a nice day, students.